Hello, assalamu alaikum. You are going to love today's recipe. This is beef and barley soup. You can call it beef and barley stew. I have 1 pound of barley and I have 2.5 pounds of beef with bone in. So let's get started. I already cleaned the beef. It's ready to be cooked. Barley is clean and soaked. I have celery, carrots, onions, ginger, pepper, garlic, bay leaves. सारा कुछ है हमारे पास. I'm just going to add 2 spoons of oil just to cover the bottom. And now I'm going to add beef piece by piece. एक एक पीस करके मैं इसमें लगाती जाऊंगी गरम ऑयल में. और we have to sear it from both sides. हमने ब्राउन करना है. And bone वाला गोश्त है. Remember that in this recipe we need bone in meat. And has to be beef because it's beef and barley soup. This is the best soup for winter. So let's start with this thing. Searing the beef first. इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से बीफ को हमने ब्राउन करना है पहले. और जैसे जैसे ये ब्राउन होता जाएगा हम इसकी साइड बदलते जाएंगे ताकि दोनों साइड से ठीक से ब्राउन कर सकें. We are going to brown the beef from both sides and we are going to keep turning the side until all sides are nice and brown. Alrighty. Meanwhile, I'm going to chop 4 small onions, 6 to 8 cloves of garlic, few slices of ginger, and I'm going to brown this in the drippings that you see down there. You see the brown stuff underneath the meat. जो गोश्त के नीचे brown stuff है उसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई करना है, साटे करना है. और मीट इज़ ऑलमोस्ट देयर. अब हमने इसको निकाल लेना है. मैं इसको निकालने लगी हूँ. ये कलर होना चाहिए. दिस इज़ द नाइस रिच कलर दैट आई वाज लुकिंग फॉर. So the beef is ready. I took it out. This is the drippings. ये drippings हैं जो नीचे बच गया है. इसके अंदर मैं प्याज डाल के इसको सौटे करने वाली हूँ. तो इससे जो कलर है बीफ एंड बार्ले सूप का जो या बीफ एंड बार्ले स्टू का जो कलर होता है वो इन ड्रिपिंग से आता है. ब्राउन कलर जो आता है. तो लेट मी क्रश सम गार्लिक्स. थोड़े से गार्लिक मैं क्रश करके चॉप कर लूँ जल्दी से. All right, there you go. That's roughly chopped. This is going now. And ginger, just slice some ginger and chop it up. There you go. Ginger, you can finely chop it. You don't have to roughly chop it. Do it fine. So you don't feel it under your teeth because not everybody likes ginger. I'm trying to clean the pot with the onions. Meanwhile, onions are getting nice and brown. And I'm just going to drop in the crushed garlic. After the garlic, in goes the ginger. Garlic के बाद हमने ginger डाला है अंदर और उसको हम इसी तरह थोड़ा सा और भून लेंगे. अब नीचे से बर्तन साफ होता जा रहा है. आपने देखा सारा ब्राउन कलर उतर गया है. All the brown color is going into the onion. Let's add carrots to it. I chopped out a whole bunch of celery. तो काफ़ी सारी celery chop की है. Let's put the celery in. उसको भी डाल दें. 1 chili pepper, very mild, हल्की सी है for flavor. And इसके अंदर अब हम डालेंगे चिकन स्टॉक जो मैंने बना के रखी हुई थी यखनी. 10 to 12 cups. 4 bay leaves डालेंगे इसके अंदर. 4 bay leaf डाले हैं. You can add 2 bay leaves. अच्छे होते हैं विंटर में बहुत. तो फ्लू के सीज़न में बहुत अच्छे होते हैं. 1 टीस्पून सॉल्ट और अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें. सम ड्राई रोज़मेरी and around 1 spoon of peppercorn. और उसको मिक्स करके आप सिमर होने दें. Let it simmer. When it comes to boil, we are going to add the meat back in. Meat वापस चला गया है उसके अंदर और अब हम इसको कवर करेंगे. We are going to cover it and we are going to let it cook for 45 minutes. बार्ले रेडी है. देखें बार्ले रेडी है. धो ली है, सोक कर ली है. Washed it, soaked it. Barley is ready to go in to the pot. Another 45 minutes and beef and barley soup is ready. Beef is nice and tender, and as you can see now we are ready to serve.
Barley is nice and fluffy, meat is tender, and it smells amazing. This is the best winter soup you will ever have. Let me give you a close-up. There you go. And let me just chop up some parsley real fast. थोड़ा सा parsley chop कर लूँ मैं. Parsley अच्छा लगता है soups के अंदर. It's the best thing in the soups, fresh parsley. So I'm going to add some. There you go. And this is my beef and barley soup. Let me know how you like it, and do share, like, comment, subscribe. And this is the winter special recipe, and if you make it, please do let me know. अगर आप बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा. I'll be very happy to hear from you. थोड़ी सी feedback दे दिया करें तो बहुत अच्छा लगता है. I will love your feedback. So I will see you with another nice little recipe. And until then, take care, stay happy, stay healthy, and stay blessed. Bye bye. Allah Hafiz. I'll see you later.